Jai Hind and welcome to another class. Now, in this pre-recorded class, we are going to be covering the topic asking questions about travel. So, while we were doing the live sessions, we've tossed this question a number of times, and some of you have attempted it, and some found it a little difficult. है ना? So, to make it easy for everyone to get a hold on how we ask questions when we are traveling, we are taking up this topic now. So in today's session, what all we'll be covering, let's have a quick view at that first. So what is the correct way to form questions about travel, experiences, plans and preferences? Okay. Also, unless we'll not have a vocabulary related to this topic with us, it's going to be difficult, right? So we have to expand our vocabulary so that we can handle the travel related topics very easily in our day-to-day conversations. Then, asking and answering travel related questions is also what we are going to be laying the emphasis on. And the last but definitely not least is build confidence in engaging in conversations about travel with one another. So when you meet people, you should be confident enough to start a conversation which talks about various travels which you or the other person has undergone or has taken up. So let's have the introduction part first. So being able to ask and also answer the questions about travel can help you making your plans, sharing experiences, and interacting with others while traveling is better. So what are we going to be covering is this. Why asking is important? Because being able to ask questions about travel can help you. How? In making your plans for traveling, because you have more information at hand, then you can plan accordingly. Then sharing experiences with others if someone's wanting to know about a place where you've recently traveled. So you'll be able to share your expertise and experience with that person better and also interact while this conversation is going on in a nicer manner. So first thing first, vocabulary. Unless the word bank is limited, how will we, unless we expand it, how will we talk better? So we need to have better words related to the topic in our kitty. So the first few things to be kept in mind are basically modes of transport. We talk about how did we reach a place, right? So it can be a plane, a train, a car, a bus, a bicycle, or a boat. So at intermediate level, I am sure I don't have to elaborate on modes of transport for you. Then we move on to accommodation. What is an accommodation? A place where you can go and stay. So that's called an accommodation. So it can be a hotel. It's not a hotel place, okay? It's a hotel. Hotel, a hostel, a guest house, a camping site, a resort. आजकल तो B&B का भी बहुत चलन है. What is that? बेड एंड ब्रेकफास्ट. ऐसी जगहें होती हैं, ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं, डॉर्मेट्रीज भी होती हैं, इनफैक्ट ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं जिन्हें बेड एंड ब्रेकफास्ट फैसिलिटी बोला जाता है, जो आपको रात को सोने के लिए एक आरामदायक बेड देते हैं, कमरा देते हैं और सुबह एक मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी आपको सर्व करते हैं एंड दैट इज़ इट. आप फिर वहाँ से चेकआउट कर लेते हैं. सो B&B भी एक आजकल का बड़ा इन सिनेरियो में, ट्रैवल सिनेरियो में इन अकोमोडेशन है. ओके, सो मूविंग ऑन. प्लेसेस टू विजिट, जर्नली बहुत सारी जगहें तो होती हैं, बट दीज आर द प्रोमिनेंट वंस. जब आप ट्रैवल के एक्सपीरियंस के बारे में किसी जगह की बात करते हैं तो आपके टूरिस्ट एक्सप्लोरेशन जो लिस्ट होती है उसमें ये सब जगहें ज़रूर प्रोमिनेंटली मार्क्ड होती हैं कि भाई इनको तो मिस करना ही नहीं है ना. की अट्रैक्शंस होती हैं उन जगहों की, जैसे कोई म्यूजियम हो सकता है, कोई बड़ी फेमस बीच हो सकती है, कोई माउंटेन एरिया हो सकता है ना, कोई नेशनल पार्क हो सकता है. जैसे अगर आप असम जाते हैं तो काजीरंगा नहीं गए तो क्या ही असम घूमे, है ना. तो काजीरंगा नेशनल पार्क एक अट्रैक्शन हो सकता है. और सिटी सेंटर की वहाँ का मेन शॉपिंग अरीना कहाँ पर है, क्योंकि शॉपिंग और सुवेनियर्स तो लेने बनते ही हैं जब आप कहीं ट्रैवल करने जाते हैं. सो एक्टिविटीज़ क्या क्या हो सकती हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं जब अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करें. वो हो सकती हैं साइट सीइंग.
कि हम देखने गए थे वहाँ वो जगह, बड़े ही खूबसूरत वैलीज थी, ब्यूटीफुल माउंटेन्स वर देयर, सो दैट साइट सीइंग कि आपको पहाड़ के ऊपर एक ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट पे ले जाते हैं और बोलते हैं अब यहाँ से आप नज़ारा देखिए, यू कैन सी सच एंड सच मोनेस्ट्री। जैसे इफ़ यू ट्रैवल टूवर्ड्स अरुणाचल, बहुत ही सुंदर साइट सीइंग एरियाज़ हैं, सो दे विल टेक यू टू डिफरेंट क्लिफ्स और माउंटेन एरियाज़, और वहाँ से पूरी वैली का आपको एक बर्ड्स आई व्यू मिलता है, तो दैट्स कॉल्ड साइट सीइंग। जाकर के चीज़ों को देखना, आसपास की ब्यूटी, नेचर की जो ब्यूटी है उसे एक्सप्लोर करना। तो साइट सीइंग हो सकती है, हाइकिंग हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है, शॉपिंग हो सकती है, और बहुत फेवरेट एक्टिविटी है आजकल जो सबकी, जिसके लिए लोग एक्टिविटी करते हैं, वो होता है टेकिंग फोटोज, क्योंकि सब कुछ तो सोशल मीडिया पे जाना है ना, क्या खाया क्या किया, तो टेकिंग फोटोज भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है आजकल। देन रिकॉर्डिंग वीडियोज, देन कॉमन एक्सप्रेशंस। अब ट्रैवल से रिलेटेड क्या कॉमन एक्सप्रेशंस हम लोग यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस फ्रेम करने के लिए? जैसे आपको पता करना है कितनी लंबी फ्लाइट है, सो यू कैन जस्ट कोट a statement like this or maybe make a question like this, how long is the flight? ठीक है, पता करने के लिए भी जगह कितनी दूर है, कितने घंटे की फ्लाइट है। What is the best time to visit? What is the best time to visit Kaziranga? What is the best time to visit Kurg? What is the best time to visit Shimla? What is a good time to go to Mussoorie? So इस तरह से आप अच्छे टाइम के बारे में पूछ सकते हैं टू नो कि भाई क्या पीक्स उसके वहाँ पर टूरिस्ट सीजन है। ओके, देन आर दे एनी फेमस लैंडमार्क्स देयर? कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स है क्या वहाँ पर? उनके बारे में भी आप पूछ सकते हैं, क्या क्या साइट सीइंग एरियाज हैं, क्या म्यूजियम्स हैं, क्या वहाँ पे प्रोमिनेंट जगहें हैं जो कभी हमें मिस आउट नहीं करनी चाहिए। तो अब आप देख लेते हैं वोकैबुलरी बिल्डिंग फॉर एसेंशियल ट्रैवल। ये टर्म्स होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, और ये कीवर्ड्स होते हैं जो हमारी ट्रैवल रिलेटेड वोकैबुलरी में ज़रूर हमें यूज़ करने चाहिए। ये कुछ वर्ड्स हम पहले वोकैब गलोर में भी कवर कर चुके हैं, तो देखते हैं उनमें से कितने हम सीख चुके हैं। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन होती है वो जगह जहाँ पर हमने जाना है, ठीक है। सो द प्लेस समवन इज ट्रैवलिंग टू, तो से सपोज आप पूना से मुंबई जा रहे हैं, सो मुंबई इज गोइंग टू बी योर डेस्टिनेशन। सो इसका एक एग्जाम्पल देखिए, व्हाट्स योर फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? So if someone asks me this, so I will say my favorite travel destination is Andaman Islands. It is beautiful. तो इस तरह से आप एक क्वेश्चन फ्रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आइटिनरी। बड़ा ही अच्छा वर्ड है ये, और इसको ज़रूर यूज़ कीजिए, ये वोकैबुलरी में ज़रूर होना चाहिए जब भी आप ट्रैवल से रिलेटेड ये बात करें। इसका क्या मतलब होता है? अ प्लान्ड स्केड्यूल फॉर अ ट्रिप। आपको एक अगर आप ट्रैवल एजेंसी में जाते हैं या मेक माई ट्रिप या किसी से कंटैक्ट करते हैं कि भाई मैंने मुंबई जाना है, 3 दिन का ट्रिप मेरा बना के दीजिए, तो वो आपको बताते हैं डे 1 पे ये करेंगे, डे 2 पे आप ये एक्टिविटी करेंगे, यहाँ जाएंगे, एलिफेंट केव्स देखेंगे, गेटवे ऑफ इंडिया जाएंगे। तो ये क्या है? ये आपका एक स्केड्यूल, आपका एक टाइम टेबल बना दिया उन्होंने, किस डे पर आपको किस टाइम वो कहाँ लेके जाएंगे। सो उस तरह के प्लान को हम कहते हैं आइटिनरी। Do you usually create an itinerary before traveling? क्या ये आप अपना एक ट्रैवल प्लान, रफ ब्लूप्रिंट रेडी करते हैं ट्रैवल से पहले? सो दैट वर्ड इज आइटिनरी। नेक्स्ट अकोमोडेशन, ये अभी हम पहले ही कवर कर चुके हैं, अ प्लेस टू स्टे। सो अ प्लेस टू स्टे ड्यूरिंग अ ट्रिप इज एन अकोमोडेशन। What type of accommodation do you prefer? Do you prefer a Airbnb? Do you like to stay in a hostel, or you want to be in a hotel, or you prefer the new resort which is made here? So you can choose your accommodation accordingly. Next, travel budget, very important travel budget, and also is travel insurance. Okay, so travel budget, so budget क्या होता है? The amount of money which you've kept separate for doing a particular thing. So the amount of money set aside for a trip is a travel budget. So do you manage your travel budget well? So can you manage this travel within my travel budget? इस तरह से भी इस शब्द का यूज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज साइट सीइंग। साइट सीइंग यानी फेमस एरियाज को विजिट करना। सो गो विजिट फेमस प्लेसेस और लैंडमार्क्स ऑफ अ प्लेस इज कॉल्ड साइट सीइंग। Do you enjoy sightseeing or relaxing during a vacation? Do you enjoy sightseeing or relaxing during a
vacation? What do you like? Do you like to travel a lot and see the places, or you just want to have a good leisure time at home or at your hotel and rest? So अब आ जाते हैं grammar पर. So grammar is a very, very important aspect of spoken English, and we have to take it along no matter what topic we are dealing in. So हमारा focus is going to be on asking questions. So let's understand what is going to be the basic question structure when we have to ask anything, any topic related to travel. Now the first one is your yes and no questions. If you're wanting to frame a yes or no question जिसका आंसर होगा या तो yes या no, तो किस तरह का क्वेश्चन आप फ्रेम कर सकते हैं? तो वैसे जिन क्वेश्चंस का आंसर yes and no होगा उनके कुछ एग्जांपल्स देखिए आप किस तरह फ्रेम करेंगे. Do you enjoy your trip? तो आपका auxiliary verb या did you, sorry, my bad, did you enjoy your trip? तो क्या आपने अपना ट्रिप एंजॉय किया? तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं. Did you enjoy your trip? तो auxiliary verb, subject, main verb and object. तो इस तरह का स्ट्रक्चर लेकर के आप yes and no क्वेश्चन को क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है हैव यू एवर ट्रैवल्ड अब्रॉड. तो इस तरह से आप इंफॉर्मेशन किसी से ले रहे हैं, क्या कभी आपने बाहर ट्रैवल किया है? ये एक बेसिक येस एंड नो क्वेश्चन पूछने का स्ट्रक्चर हुआ ट्रैवल से रिलेटेड. अब हम आते हैं, कुछ होते हैं WH वर्ड्स जैसे व्हेन, व्हाट, हु, हाउ. इनसे रिलेटेड अगर हमने कोई भी क्वेश्चन बनाना है ट्रैवल टॉपिक्स को मद्देनजर रखते हुए, तो हम किस तरह से बनाएंगे? वेयर डिड यू गो ऑन योर लास्ट वेकेशन? कहाँ गए थे? नेक्स्ट, व्हाट्स द बेस्ट प्लेस यू हैव विजिटेड? कौन सी थी वो सबसे अच्छी जगह जो आपने अब तक विजिट करी है? नेक्स्ट, हाउ डू यू यूजुअली ट्रैवल? व्हाट्स जनरली द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यू चूज टू ट्रैवल? So is it by plane, train or a car? So this is how you can frame basic questions related to various travel topics which come our way and we deal with them. Now there are certain questions which are indirect questions. And how will we ask those? Could you tell me how to get to the train station? Now here I am using the modal could because I am being very polite. I am wanting the answer from someone in a nicer and a person maybe I don't even know. But it's a better refined way also of asking anyone you know also. Could. Do you know where can I find a good restaurant? That sounds a little informal, right? So this is how you form another question. It can also be, could you please tell me where can I find a good restaurant? So see, with the change in the basic adding and taking away of the words, you can form various questions which mean the same, right? And it comes with practice. Now, questions with modals. See, can you recommend a good hotel? Yeah, so can, then could. Could you tell me the best way to get there? Yes. Should I bring warm clothes? So ye जो words हैं can, could, should, these are your modals. So we now move on to the next one. Now let's practice some more. Okay. So you will try doing it along with me now. Dash did you stay during your vacation? The correct word would be, the question word would be where. Dash you ever traveled alone? Have you ever traveled alone? Next, dash you enjoy your trip? So, did you enjoy your trip? Now this one is interesting. Dash there a direct flight to Rome? So you can use is. Is there a direct flight to Rome? Next, dash did you go on your last vacation? कब गए थे? कब के लिए we use when. Next, dash did you get there? कैसे आए? कैसे के लिए we use how.
How did you get there? And the last one on the screen is dash did you choose that destination? चुनी है ये destination. तो क्या हो सकता है? क्यों चुनी है ये destination? And the word would be why did you choose this destination? So we now move on. There's a little activity. We thought that we can see a small dialogue. Okay. So it is a very small conversation. Where are you planning to go this summer? Someone's asking someone. So the answer the person is giving is, I am thinking about visiting Italy. It's not Italy, Italy. Okay. I always wanted to see Rome and Venice. Okay. So that's a nice piece of conversation. So the questions for comprehension now, let's see. We've understood this. So now you have to, with me across the screen, very nicely you have to solve the questions which I am putting across to you. Where is the speaker planning to go? So you can say the speaker is planning to go to Italy. Okay, Italy, he wants to see Rome or Venice. Next, what places does the speaker want to visit? Yes, so now here we can say he wants to visit Venice. So let's redo and see how it fits the bill now. Where is the speaker planning to go? The speaker is planning to go to Rome. What are the places the speaker wants to visit? He wants to visit Rome and Venice. Chaliye. Now this is a little piece of memory from my travel log. I went to Japan last year. It was amazing. I tried sushi and visited cherry blossom gardens. So Japan is famous for its sushi and also for the cherry blossom gardens. So once you go visit a place, you want to do everything and experience everything which is famous there. So I didn't miss out on any. So where did I go last year? Which place? Yes, I went to Japan last year. What food did I try? I tried sushi, which is their favorite food there, or very popular food. What did I visit? Which place I visited and enjoyed the most? I just mentioned about the cherry blossom gardens. So this is how, if someone's mentioning something to you, you can, extract the major information out. Now we move on to vocabulary words. The first word is the tourist attraction. Okay. What is that? It's a noun. It shows a place of interest where the travelers would like to visit. So the first one, the example of the sentence is the Eiffel Tower is one of the most popular tourist attractions in the world. Next, souvenir. We've already done this in the class. Souvenir. Eiffel Tower. Okay, so souvenir is what? Souvenir is basically item which we bring when we go traveling. It's a remembrance of that place. So I always buy a small souvenir to remember my travel or to remember my trips. Next is a layover. Layover also is a noun. So I purposely wanted some more words today because we are doing travel. So we need to have these travel related vocabulary apart from what we've done earlier here. So layover. Layover is generally a short trip at an airport while you're traveling to your final destination. So there's a short trip at the airport when the plane stops there for a while. So suppose you're traveling from Chennai to Chandigarh. So maybe the plane would have a layover, a stopover at Pune or Mumbai. Okay, so that's a layover where you can just get down at the airport, or maybe you're not sometimes allowed to get down. You just wait there for good 1 hour, 45 minutes while the things are being done behind the screen. So that's called the layover. Or maybe sometimes, you get time to go out and explore the place and get back to the plane. That depends airlines to airlines. So basically a short stop at an airport while traveling to a final destination. It's a stoppage at one airport. Okay, it's not a direct flight. It is a layover flight. It stops in the middle somewhere between the two destinations. So the example is, we had a 2 hours a layover in Dubai after flying from Thailand. Yes. So from Thailand, I was coming to
this place, and the flight had a layover of 2 long hours at Dubai. So travel insurance, when we were doing this travel budget, I told you. So I took it up here for you. A type of insurance that covers losses or risks associated with travel which can occur when you are traveling, such as your medical emergencies or trip cancellations. So this is a kind of insurance which a traveler must do when you're traveling abroad or also within the country. It will save a lot of money in your wallet for you. So the example is, having travel insurance gave me peace of mind during my vacation because you are safe. So with this, we come to the end of today's presentation and lecture for you. Whatever are the vocabulary words related to travel, the basic structure of the questions, how we will be forming them, go visit it again. दोबारा देखिए, दोबारा समझिए, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो write down your difficulties or the confusions which you have, so that when we meet in the live, we can ease it off for you. All right. Till the time we meet next is thank you and Jai Hind from my side.